Yeah, so the question is motivation real? So let's break it down. And you've written as Johnny has been with people of different age groups. No one can tell the tales better than him. So here comes one more. Is motivation real? So motivation के बारे में बोलेंगे. Oh, it's cold here. So सबसे पहले या मोटिवेशन के बारे में. Is motivation real? That is the question. Oh, as you can see, I don't know the answer. That's why I'm buying time to get the answer, grabbing it out there in the air. I say, reaching out in the sky and in the universe for the answer. तो वैसे आंसर तो मेरे पास है नहीं कि is motivation real. I have had situations where I have tried to motivate a lot of people, different things, different fields, different situations. It's sometimes the physical sense of motivation. कहीं जैसे push-ups नहीं हो रहा है किसी से और मैं कह रहा हूँ come on you can do it. एक वो वाला रहता है. एक कहीं पे एक intellectual motivation रहता है कि 5+5 solve नहीं हो रहा है किसी बच्चे से और हम कह रहे हैं थोड़ा सोचो ऐसे करो वैसे करो. So what is motivation exactly? It's like if you are in वो एक अपने मीम देखा है ना, एक फोटो जो लैडर एक खड्डे में फंसा हुआ होता है एक बंदा और ऊपर से वो लैडर बाजू में है लेकिन नीचे से वो चल हो जाएगा, ट्राई कर रहा है लेकिन लैडर डाल नहीं रहा है. सो एक मोटिवेशन होता है कि इफ यू आर एग्जॉस्टेड एंड यू आर इन दैट खड्डा और फिर मैं ऊपर से बोल रहा हूँ हो जाएगा लेकिन लैडर डाल नहीं रहा हूँ. अब रस्सी में फेंकूं और फिर चढ़ने का मोटिवेशन करूँ तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग. सो मैं नीचे रस्सी डाल दूं खड्डे में और ऊपर से मैं कह रहा हूँ कि चल आजा, कम ऑन यू कैन डू इट, थोड़ा और. दैट इज अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ मोटिवेशन. अब एक हवा में से मोटिवेशन जो होता है, plenty of times what I see parents, children and anyone, teachers also, teachers to a great extent. Okay, India में क्या है, we rely on teachers so much because of the guru shishya policy that I feel कि वो motivation जो हम देते हैं बच्चों को, so it's mostly empty. Why am I saying empty? Now I see a lot of parents motivating their kids to be fit, but they themselves are not fit. So that in a way is a very empty kind of motivation. When the child sees the father or and mother, and हो तो बहुत बढ़िया है, but if it's like one of the parent at least वो कुछ कर रहा है, सुबह उठ के भाग रहा है, कुछ कर रहा है और फिर जब बोलता है बच्चे को तो that motivation works wonders. So motivation रियल और नॉट रियल की बात नहीं है. मोटिवेशन जो मेथड है, जो तरीके से हम दे रहे हैं और उसके साथ जो टूल्स दे रहे हैं, जैसे खड्डे का मैंने बोला, दैट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस. के मैं एक होता है एक फिर हो जाता है लेवल, एबिलिटी, द स्किल दैट यू हैव, आई मीन द स्किल दैट यू हैव एंड द स्किल्स एंड एबिलिटी दैट यू हैव ग्राफ एंड द चैलेंज. तो if it's too challenging, your abilities are here and challenge is up there, so you feel demotivated, you feel giving up, you feel depressed and anxiety, basically. Sorry, depressed, you feel anxiety. And if you have the skill and the ability का ग्राफ यहाँ जा रहा है लेकिन चैलेंज ही फील नहीं हो रहा है तो you feel depressed. वो later on you get bored, and boredom के आगे depression है, all sorts of things there. So how do you give that that thin line between it's challenging enough where your skills match the challenge plus you have the right tools also. So एक तो होता है skills, challenge, and then उसके साथ साथ वो जो tools है, availability of the tools. Say example, if there is a kid who can do great pull-ups और घर पे बाहर ही नहीं है, you want the kids to have a good shoulder and upper arm का कुछ करना है. बहुत से बच्चों का आजकल posture थोड़ा down हो गया यूं वाला, तो you want the kids to have a nice broad shoulder posture, but घर पे कुछ है ही नहीं, tools ही नहीं, और बोल रहे आप सीधा बैठो, खाली बोलने से नहीं होगा. So that kind of motivation is a very empty motivation when you have those kinds of motivating words. So motivation is always real and not real से ज़्यादा the method of motivation, the tools that you have, the skill and the challenges that you face with. Sometimes if the challenge is too high, तो कैसे होगा मोटिवेशन? मतलब यू कैन नेवर फील मोटिवेटेड बिकॉज वो तो होगा ही नहीं तुमसे. एक मैं छोटे बच्चे को अगर समझ लो एक 3-4 साल का बच्चा है, उसको मैं कुछ समझ लो सेंटेंस पढ़ने बोल रहा हूँ जो उसने पढ़ना सीखा भी नहीं, तो दैट इज बियॉन्ड दैट गाय. आई कांट मोटिवेट दैट चाइल्ड टू रीड.
At the best that child would do is blabber something ऐसे लेके के ऐसे कुछ भी पढ़ लेगा 3 year old or 4 year old or even 5 year old depends कब सीखता है. अब now as a parent what we feel is के what level do we start something के reading, for example, when should the child start reading? And so now child is not able to read and you want to motivate the child to read. How do you do that? So again, do you decrease the challenge so that the skills can increase? And what tools do we provide? कौन से type के books है? So if we are motivating kids with the right tools, the skill set is also observed, and at the same time the challenges are kept in mind. It's not too challenging, or it's not like बिल्कुल ही फट दे के हो गया तो मतलब है नहीं, और साला होने वाला ही नहीं, ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ तो बियॉन्ड दैट चाइल्ड्स एबिलिटीज, वो भी मतलब नहीं. सो मोटिवेशन वर्क्स व्हेन ऑल दीज थिंग्स फैक्टर्स जो है वो सेट हो जाते हैं. एंड सिचुएशन मैनेज लॉट ऑफ थिंग्स इज लाइक सिचुएशनल. एंड नाउ इसके अंदर नाउ दीज आर जस्ट नाउ इसके अंदर हम इमोशनल हेल्थ डालते हैं, इसके हम अंदर इंटेलेक्चुअल एक वो डाल दें, स्पिरिचुअल एंड ऑल दीज थिंग्स अगर डालें तो एक बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ क्रिएट हो जाता है. I've had people who have not been able to do something because of emotional factors rather than their physical ability. So that is also there. So I think this covers the part. Is motivation real? Yeah, motivation is always real. You are motivated. एक self motivation है. You are motivated by that. Should be taught a lot. Self motivation thing. So like for example, when me and Khanak, when we do something and she's like on that thing and she's climbing and she's scared, so she tends to come on, I can do it, come on, I can do it. She has to. Now एक आध बार मैंने बताया था कि ऐसे कर. Now she does it and she says it on her own. वो अपने आप बोलते बोलते करती है. तो क्या हो जाता है कि more than the fear aspect of it, more than the negative things that go in the mind while you're trying something, be it physical, be it intellectual, be it anything, she's more focused on the क्या बोलेगा the motivating aspect of it, the positive aspect, the completion of it, कि भाई पार करना है, ऊपर तक ही जाना है, बस वहां तक पहुंचना है. बीट कुछ राइटिंग करके बस 1-2 लाइन और फिनिश करना है, something like that. जैसे कि मान का म्यूजिक का ले लो. So motivating fact. Now एक हो जाता है कि you don't have any skill for it, but जैसे मान ने अपना अला टूल का you develop, you're at it constantly at it. 1 साल 2 साल लगे रहे, आप डेली बजा रहे हो, तो आपका वो फिर then motivating factor sometimes is patience and perseverance. These two तो are the best words for children. Patience, perseverance and practice. ये तीन को combine करके जो रहता है motivation, इससे बड़ा motivation है नहीं. So repetition now, repeating it consistently, doing it now. These are things, these are factors. For a child, it's very hard to find all that these emotional cues and pick them up. And for parents also, it's not a walk in the park. It's all complex. Like I say time and again, एक बच्चा पैदा करने में मतलब 2 लोग चाहिए, लेकिन उसको बड़ा करने के लिए पूरा समाज, पूरा सपोर्ट दुनिया का चाहिए. मतलब तो वो आजकल सपोर्ट मिसिंग है somehow, बिकॉज ज़्यादातर लोग जो बच्चों को सपोर्ट कर रहे हो मॉनेटरी सपोर्ट है, या तो सलाह सूचन भी काफ़ी ओल्ड स्कूल वाले और घिसे पिटे टाइप के. सो अपग्रेडेड रहना बच्चों के माइंडसेट के साथ और उनको सिखाना, वो अभी टीचर्स में मिसिंग है, पेरेंट्स में मिसिंग है. और बच्चे इस चक्कर में काफ़ी कंफ्यूज और लेटर ऑन एंजाइटी और डिप्रेशन से ड्रिवन बच्चे हैं. तो उसका सॉल्यूशन यही है कि वी नीड टू अपग्रेड आवरसेल्व्स एज टीचर्स एंड पेरेंट्स, और बच्चों को फिर उसके हिसाब से हम चैलेंज करें, उसके हिसाब से स्किल करें, उसके हिसाब से एक स्कूलिंग का सिस्टम भी हम एक डिसाइड कर सकते हैं. अनस्कूल करना हो या घर पे कुछ लाइक स्किल बेस्ड अपने सिखाए, तो द स्कूल सिस्टम इटसेल्फ हैव बीन ऑलवेज क्रिटिकल अबाउट दैट एज वेल. So that is also there. Now motivating, sometimes क्या होता है, we want to motivate our child to do something which the child जो तो उसका नाता नहीं है. Maybe later on they wanted, like supposing your child has an innate quality to be a great dancer, but we are focusing on, say you are taking them to some table tennis class or maybe swimming class and you want them to be a swimmer and you are motivating them to be a swimmer, but अंदर से वो quality है dancer वाला, उसमें कैसे motivation काम करेगा? Then the motivation could be very real and very powerful, but then वो अंदर से वो है ही नहीं spark.
or at the same time many times you also see that the child has a spark for certain things, like again the child has great talent and that innate quality of being a great dancer, but the child is not interested in dancing. होता है ना, मैं एक बार पढ़ा था कि एक लड़की थी, उसको बढ़िया author लिखती थी, but she didn't want to be author, she wanted to do something else. So it's sometimes you're good at something but you don't love to do it. वो ikigai वाला है ना कि live a life like do something, job जो बच्चे हमको करना है बड़े होके जो काम करना है, so do something that you like to do and you love to do something that you're good at, do something that of course pays you something, you make money out of it, and do something which helps society in some way or the other. So in this, a lot of kids and parents also see that I'm good at this, so it is sometimes naturally हम ये सोच लेते हैं कि if this person is good at it मतलब they must be loving it, but that's not the case. If you're good at something, that doesn't mean you love it. For example, like you have parents who are very good at making money, maybe they don't love making money, maybe they don't like that 12-hour thing and all that stress in the mind. I don't know, but face से काफी बार मिलते हैं, बातें करते हैं, तो it the real picture seems pretty dicey. So that is also there. So it's all it's a big, yes, like you say, it's chaotic, but there's method to the madness. Peace out.